Namaskar class, good evening all of you. So welcome to the live online session of ISC English medium batch. We are doing the Indian geography, the drainage system. It is I think the fifth lecture of the drainage system. We have just started with the Himalayan rivers and we have finished with the Indus. Today we will see about the tributaries of Indus. Okay, today we will see. So class, we have finished with the Indus River, and first we have started with the Indus River system. As I told you, class, in Indus River system comprises of the Indus River along with 5 rivers. That's why the area is known as Punjab. 5 नदियों से बना हुआ इलाका पंजाब, और उनमें से जो वेस्टर्न मोस्ट है वो है आपके झेलम. तो हम इस तरीके से चलेंगे क्लास कि हम आपको पहले मैप में दिखा दें कि किस तरीके से क्या चीजें हैं मैप में. फर्स्ट वी विल सी. वेल, अंकिता इज सेइंग दैट आई एम नॉट ऑडिबल. एम आई ऑडिबल और एम आई नॉट ऑडिबल? You are audible. Audible. Ankita, then please check your internet connection. Okay, please check your internet connection. There might be some problem with your internet connection. As I was talking about the Indus and its tributary, the westernmost tributary of the Indus river is, guys, Jhelum. Okay, Jhelum को हम संस्कृत में वितास्ता, ऋग्वेदिक पीरियड में वितास्ता के नाम से जानते हैं. वितास्ता, ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें उत्तराखंड पीसेस बहुत पूछता है, आईएएस भी पूछ लेता है. वितास्ता के नाम से जानते हैं आप. इसे कश्मीरी लैंग्वेज में इसे वेत कहा जाता है. वेत, VYETH, वेत कहा जाता है. देन अलेक्जेंडर ने झेलम को एक तरीके से जो झेलम नदी है उसको इन्होंने आपके हाइदापेस कहा है. ओके, ये सब चीजें एग्जाम में आ चुकी हैं गाइस. ओके, दीज थिंग्स हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ओके, सो अगर आप देखा जाए तो ये गाइस एक्चुअली, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक गाइस, झेलम इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस. झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, और चेनाब आगे जाकर के इंदस में मिलती है. झेलम इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस. झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, एंड चेनाब फर्दर मीट्स इंदस. ओके, तो झेलम आपकी वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग. हेडिंग डाली क्लास, झेलम. झेलम देखिए, झेलम इज one of the five major eastern tributary of Indus. 5 major eastern tributary of Indus. Eastern tributary of Indus. Jhelam's Sanskrit, the Jhelam's Rigvedic name is Vitasta. Jhelam's Rigvedic name is Vitasta. Name is Vitasta. While in Kashmir, this river is known as Vet. While in Kashmir, this river is known as Vet. VYETH, Vet. अब ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. वेत, ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड बोले तो एंशिएंट इंडिया, ancient period, the Greeks called this river as Hydaspes. The Greeks called this river
as Hydaspes, Hydaspes. Greek called this river as Hydaspes. Full stop. The famous Battle of Hydaspes. The famous Battle of Hydaspes was fought in 326 BC. Was fought in 326 BC. BC between Alexander and King Porus. Between Alexander, लिखे, the famous Battle of Hydaspes was fought in 326 BC between Alexander the Great and the King Porus of Paurav kingdom on the banks of Jhelum river. On the banks of Jhelum river. Sir, of which kingdom? Of Paurav, Paurava. Paurav, Kaurav मत लिख दीजिएगा, Paurav है, Paurava. Paurav kingdom on the banks of Jhelum river. In this battle, Alexander. So can you please repeat the name? Between the King Porus of Paurav kingdom, Paurava, on the banks of Jhelum river. In this battle, Alexander emerged victorious. Alexander emerged victorious and Porus surrendered. The Battle of Hydaspes is. So please repeat. In this battle, Alexander emerged victorious and the Porus surrendered. Full stop. This battle was significant because the Indian subcontinent came under the influence of ancient Greek, which continued somewhere around 10 AD. 10 AD. Sir, 10? AD. So would you please repeat from which continued? Which continued somewhere around 10 AD.
when Indo-Greek king Menander, Menander, when Indo-Greek king Menander ध्यान रखना, आजकल एंशिएंट इंडिया पे कुछ ज्यादा जोर हो रहा है, सारे पीसीएस आईएएस एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो किसी समय में होता था कि एंशिएंट इंडिया नहीं पूछी जाती थी, मॉडर्न इंडिया पूछी जाती थी, अब वो किसी समय कुछ भी हिस्ट्री पूछ ले रहा। तो मिनेंडर की कैपिटल क्या थी, पीसीएस में क्वेश्चन बना हुआ है। मिनेंडर हु मेड सागला, SAGALA, सागला, ब्रैकेट में लिख लीजिए मॉडर्न सियालकोट एज इट्स कैपिटल। सियालकोट पाकिस्तान में है। सागला, SAGALA, सागला, ब्रैकेट में लिखिए मॉडर्न सियालकोट एज इट्स कैपिटल। So what did you say? Siagla? सागला, SAGALA, और मॉडर्न सियालकोट एज इट्स कैपिटल। बाकी डिटेल में एक और चाहे तो लिख लीजिए। मिनेंडर इज नोन एज मिलिंद, is known as Milind in Pali language. Meander is known as Milind in Pali language. आईएएस के में भी क्वेश्चन बन चुका है, पीसीएस में भी क्वेश्चन बन चुका है। ये क्या है? What was Yavanapriya? Anybody in the class? So is it about conversion of Menander into Buddhism by Nagarjuna? No, that was known as Sarjana मिलिंद पाणो। मिलिंद पाणो जो आप बोल रहे हो ना, वो मिलिंद पाणो है। Sir, Yavanapriya is a spice. Spice? What spice? Spice तो बहुत सारे होते हैं। It is known as black pepper. Black pepper. Black pepper. Yes. काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। यवन जो यवन था, यवन ग्रीक्स को कहते थे। एंड फेवरेट ऑफ ग्रीक इज यवन प्रिय। यवन प्रिय। ओके, ध्यान रखने का, पीसीएस और आईएएस दोनों में क्वेश्चन बनना है। इन एंशिएंट टेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है, इन एंशिएंट टेक्स्ट यवन प्रिय रिफर्स टू व्हाट? ए ब्लैक पेपर, बी कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, कुछ बी सी डी में कुछ भी आंसर दे देगा, ऑप्शन दे देगा। ओके, एंड सर्जना जो आपने क्वेश्चन जो पता है ना, दैट इज मिलिंद पाणो। इट इज व्हेन मिनेंडर Yeah, he was converted to Buddhism by हाँ, Nagarjuna. when Menander asked some questions from Buddhist monk, Nagsena. हाँ, नागसेना। एक्चुअली गाइस, मेरा ये जो मैंने टैबलेट लिया था, इसका कुछ ड्राइवर सही से इंस्टॉल नहीं हुए थे, दैट्स व्हाई मैं अपने पहले लेक्चर्स में ये टैबलेट वो अभी यूज नहीं कर पाया था। ओके, तो ये मिलिंद पाणो, ये भी क्वेश्चन बहुत बना मिलिंद पाणो पे क्लास। मिलिंद पाणो, कुछ क्वेश्चंस क्लास रिपीट होते ही होते हैं, आप उसे नहीं, हम और आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ये रिपीट होते रहेंगे।
ओके, तो आसान क्वेश्चन में गलती मत करना, ये सब आसान क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। यवन प्रिय, ओके, मिलिंद बाणो, नाग सेना, ओके, लिखिए क्लास। नेक्स्ट लाइन, एक और लाइन लिख लीजिए क्लास, एक और लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। जैसे आपने देखा होगा इस बार मैंने कई चीजें जो हम सिर्फ क्लास में डिस्कस करते हैं, आपने उसे एग्जाम में देखा। ओके, लिख लीजिए। द इंडो ग्रीक रूल, द इंडो ग्रीक रूल was formally established in Indian subcontinent was formally established in Indian subcontinent by Demetrius I. Why Demetrius I? Demetrius, Demetrius I. Demetrius I, also known as Dharmamitra, also known as Dharmamitra, 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 known as Dharmamitra. बाकी सारी डिटेल का एंशिएंट इंडिया में पढ़ाऊंगा, and I will take the ancient India. देखिए क्लास, तो ध्यान रखिएगा, झेलम को ग्रीक में हाइदापस कहते हैं। बैटल ऑफ हाइदापस में अलेक्जेंडर जीता था, पोरस हारा था। ओके, लिखिए क्लास। The Jhelum river, which is known as Vitasta in Sanskrit, which is known as Vitasta in Sanskrit, is also mentioned in Nilmat Puran. It's also mentioned in Nilmat Puran, Nilamata, Nilmat Puran. Nilmat Puran, full stop. लिखिए, द झेलम रिवर emerges from a place known as Verinag, as a spring. So please repeat. Jhelum emerges from a place known as Verinag as a spring in the southeastern part of Vale of Kashmir. Sir, eastern part of? Southeastern part of Vale of Kashmir, VALE. First stop. The place
The spring makes a lake. The spring makes a lake known as Sheshnag Lake. Known as Sheshnag Lake. Full stop. It flows northward from its source. It flows northward from its source to Wooler Lake. It flows northward from its source to Wooler Lake, and from Wooler Lake it changes its course to southward, and from Wooler Lake it changes its course to southward at Baramulla. Jhelum river enter a gorge. Jhelum river enter a gorge. So please repeat last sentence. At Baramulla, the Jhelum river enter a gorge, Gorge. Gorge. So, and Baramulla? At Baramulla, the Jhelum river enter a gorge. Gorge. In Pir Panjal range. In Pir Panjal range. Pir Panjal range. Full stop. It turns to the northwest. It turns to the northwest below Uri. It turns to the northwest below Uri and to the south below Muzaffarabad. Sir, after northwest, It turns to the northwest below Uri, URI, जो मूवी आई थी उड़ी. Below Uri and to the south below Muzaffarabad. And to the south below Muzaffarabad and continues until Mangala is reached. And continues until Mangala is reached. Mangala is reached, Mangla. So stop between Muzaffarabad and Mangala. Between Muzaffarabad and Mangala, the Jhelum river roughly runs along Indo-Pakistan border. Roughly runs along Indo-Pakistan border for 170 kilometer. For roughly 170 kilometer and emerges at Potwar Plateau. And emerges at Potwar Plateau. Which plateau? Potwar Plateau.
Potwar Plateau. Near Mirpur. Near Mirpur. ब्रैकेट में लिख लीजिए POK. Near Mirpur. It joins the Chenab at a place called Jhang. A place called Jhang. 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 ब्रैकेट में लिख लीजिए त्रिमू. TRIMMU. त्रिमू. झंग में एक जगह नाम है त्रिमू, वहां मिलती है. एट अ प्लेस कॉल्ड झंग, ब्रैकेट में लिख लीजिए त्रिमू. त्रिमू. Where it joins Chenab. Thus in a sense, Jhelum is a tributary of Chenab river. Jhelum is a tributary of. Thus in a sense, Jhelum is a tributary of. Tributary of Chenab river. The total length of Chenab river, total length of Jhelum river is 724 kilometer. Is 724 kilometer. Kilometer, and out of its total length, kilometer is navigable. 160 kilometer is navigable. Full stop. Next, ले class Chenab. Chenab. Next लिखे class Chenab. The Chenab of Jammu and Kashmir, known as Chandrabhag in Himachal Pradesh, is known as Chandrabhag. Sir, can you please repeat after the Chenab of Jammu and Kashmir? Is known as Chandrabhag in Himachal Pradesh. The Rigvedic name of Chenab river is Askini. The Rigvedic name of Chenab river is known as Askini. 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 ASKINI.
In Atharvaved, it is known as Krishna. In Atharvaved, it is known as Krishna. While in other Sanskrit text, it is known as Iskamati. It is known as Iskamati. 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 The Greeks called Askini as Ekesinis. The Greek called Askini as Ekesinis. Akesines. Ekesinis. However, in Mahabharata, it is known as Chandrabhag. It is known as Chandrabhag. Full stop. लिखिए. The Chandrabhag is made up of two streams. The Chandrabhag is made up of two streams called Chandra and Bhag. Made up of two streams called Chandra and Bhag. Not Bhaga. हम इंग्लिश मीडियम एक ए जोड़ देते हैं. Okay, Chandra and Bhag. These two streams meets at Tandi, Tndi. Meets at Tandi, Tandi, at Kelong. Meets at Tandi, at Kelong, Keylong, in Lahaul Spiti district. In Lahaul Spiti district in Himachal Pradesh. Lahaul Spiti district in Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. So the Chandrabhag flows northwestwards. The Chandrabhag flows northwestward and runs parallel to the Pir Panjal range. And runs parallel to the Pir Panjal range.
Pir Panjal range for some distance. Near Kishtwar. Near Kishtwar. So please repeat after Pir Panjal range. Pir Panjal range for some distance. Full stop. Near Kishtwar. It cuts a deep gorge in Pir Panjal range. It cuts a deep gorge in Pir Panjal range. Panjal range. The Chenab River. The Chenab River turns southwards and flows in this direction. Turns southwards and flows in this direction for a short distance. The Chenab Firant. The Chenab River turns southwards and flows in this direction for a short distance. And flows in this direction for a short distance. For a short distance. Distance. Further down it turns to west. Further down it turns to west and enters the plain area near Akhnur. It turns to west and enters the plain area near Akhnur. Akhnur. First stop. From here, it moves ahead through the plains of Pakistani Punjab. From here, it moves ahead through the plains of Pakistani Punjab. Pakistani Punjab. To reach Panchnad. To reach Panchnad, where it joins Satluj. Where it joins Satluj after receiving the water of Jhelum and Ravi rivers. Where it joins Satluj after receiving the rivers of Jhelum and Ravi rivers. So receiving the Water of Jhelum and Ravi rivers. First stop. क्लियर है गाइस? देखिए, the total length of Chenab River is 960 kilometer.
The total length of Chenab River is 960 kilometer. किलोमीटर फर्स्ट स्टॉप. देखिए क्लास. नेक्स्ट रावी. रावी नेक्स्ट जो है रावी रिवर है. The Ravi River originates near Rohtang Pass. Originates near Rohtang Pass in Kullu Hills, Himachal Pradesh. In Kullu Hills, Himachal Pradesh. It is a transboundary river crossing northwestern India and eastern Pakistan. It is a transboundary river crossing northwestern India and eastern Pakistan. Sir, kindly repeat the entire line after Himachal Pradesh. Okay. It is a transboundary river crossing northwestern India and eastern Pakistan. It is one of the 5 major tributary of Indus. It is the five major tributary of Indus. Please repeat. It is the one of the 5 major tributaries of river Indus. First stop. The Rig Vedic name of Ravi River is Parushani. The Rig Vedic in Rig Vedic name of Ravi River is Parushani. It is also known as Iravati. It is also known as Iravati. Sir, please repeat. The Rig Vedic name of Ravi River is Parushani. Parushni. क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. वो क्या करेगा? मैच दी फॉलोइंग देगा. वो मतलब आपके जो यूपीएससी है वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा. वो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी.
एक तो इस तरीके से पूछेगा, या आपसे वो इस तरीके से पूछेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब या तो वो आपसे संस्कृत नेम दे देगा, और या वो आपसे आपको ग्रीक नेम दे देगा, और उसे आपसे आपको मॉडर्न नेम से मैच करने को कहेगा। मैच द फॉलोइंग में, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अस्कनी, वितास्ता, इरावती, बिपाशा। बिपाशा ब्यास को कहते हैं। इस तरह की क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रटने होंगे एंशिएंट इंडिया के जितने नेम्स हैं। क्लियर है गाइस? ओके, तो मतलब इन जनरल सिविल सर्विस में कहा जाता है, दोज हु आर गुड इन दिस रोट, दे हैव मतलब a good chance to crack the civil services. And guys, please एक चीज बता दूं, और ये मत कहना क्लास मेरे से याद नहीं होता, सबको याद होता है। आपको अपना फोन नंबर याद है, घर वालों का फोन नंबर याद है, सब याद हो जाता है। ओके, घर का रास्ता नहीं भूल जाते कि घर चल रहे हैं, पता नहीं मैं किस रास्ते में था। मतलब कहने के मतलब भाई, याद तब होता है, हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग को हनुमान चालीसा याद हो, बजरंग बाण याद हो। ओके, कैसे याद होता है? डेली पढ़ने से याद होता है। तो द मोर यू रिवाइज, चीज याद हो जाएंगी। स्टूडेंट क्या करता है, वो नई चीज पढ़ेगा पर पुरानी चीज को, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता ना, पढ़ तो चुके हैं, पढ़ा तो चुके हैं। बट गाइस, सिविल सर्विस में यही एक वो इसे कहें कड़वी पिल होती है, कड़वी दवाई, यही सिविल सर्विस है। क्योंकि रिवीजन जिसने किया उसका सिलेक्शन हुआ। मैक्सिमम स्टूडेंट से कह दो नया पढ़ने को कह दो, वो खूब मन लगा के पढ़ेगा, पूरी पूरी रात नई चीज में बिता देगा। पर सर, नई चीज से इंपॉर्टेंट है पुरानी चीज का रिवीजन। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अस्किनी, सुतुद्री, परुषिनी, देन वितास्ता और सिंधु इज इंदस। ओके, लिखे क्लास। The Greeks called Ravi River. The Greeks called Ravi River as Hydrotes. Ravi River as Hydrotes. HYDRAOTES. Hydrotes. In ancient period or the Vedic period, the famous Battle of 10 Kings, was fought Sir, the famous battle. Battle of 10 Kings, Das Rajan Yuddha. The famous Battle of 10 Kings was fought on the banks of river Ravi. ये आपको वैदिक पीरियड में पढ़ाऊंगा जब। First stop. The Ravi is a tributary of Chenab.
It flows to the northwest from the place of its origin. It flows to the northwest from the place of origin. From the place of origin. And drains the area lying between southeastern part of Pir Panjal range, lying between southeastern part of Pir Panjal range part of Pir Panjal range and Dhauladhar range full stop. Some distance below Chamba, it turns to southwest. Some distance below Chamba, it turns to southwest. Cuts a gorge in Dhauladhar range. And enters the Punjab plain near Madhopur. Sir, Punjab plain. Enter the Punjab plain near Madhopur. Madhopur. It's being a part of Indo-Pakistan boundary. It's being the part of Indo-Pakistan boundary. Pakistan boundary. The river has some strategic significance. Full stop. It joins the Chenab. At a place called Rangpur in Multan. Rangpur in Multan.
Multan in Pakistan. In Pakistan. Its total length is 720 kilometer. Length is 720 kilometer. Full stop. Clear है guys? Next second daily class, Byas River. Byas River. BEAS. देखिए, the Byas River originates from Byas Kund. Originates from Byas Kund. Byas Kund. Near Rohtang Pass. Near Rohtang Pass. The Byas Rigvedic name is known as Bipasha. The Byas Rigvedic name is Bipasha. Known as Bipasha. The ancient Greek called the Byas River as Hyphasis. Called the Byas River as Hyphasis. Known as Hyphasis. Full stop. देखिए, this river, Byas River, is also known as Beja, Bejah. Beja. The Byas River originates
near Rohtang Pass in Kullu district at a height of 4361 meters. Rohtang Pass, Kullu district at a height of 4362 meters originates Rohtang Pass So please repeat the line after district at height of 4361 meters. 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 It traverses through Mandi district and enters Kangra district. It traverses through Mandi district and enters Kangra district. Its valley is popularly known as Kullu Valley. Popularly known as Kullu Valley. So it crosses the Dholadhar range. It crosses the Dholadhar range. Dholadhar range. Through a deep gorge. Further down, it turns to the west. And enters Punjab plain near Talwada. Near Talwada. After entering the plain, it turns to the southwest. After entering the plain, it turns to the southwest and joins Satluj River. Near Harike, Harike. So please repeat after entering to the plain. It turns to the southwest and joins Satluj River near Harike, Harike. Southwest And joins the Satluj River near Harike, Harike. After flowing for a distance of 615 kilometers. So kindly repeat, sir, one more time. And joins the Satluj River near Harike, Harike. After flowing for a distance of
after flowing for a distance of 470 kilometer, thus among all the 5 tributaries of Indus, the length of Beas is the shortest. Length of Beas is shortest. Full stop. Beas is the only tributary of Indus which originates in India and finally merge in Satluj in India too, and finally merge in Satluj in India, and finally merge with Satluj in India. मतलब इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही मर्ज हो जाती, ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, नहीं तो बाकी इंदस की ट्रिब्यूटरी पाकिस्तान में जाकर के मिलती हैं. Where it is not हरिके बराज. where it is? ये हरिके आपके पंजाब में है. ये भी आएगा, कल पढ़ाएंगे इन सब के बारे में. एट हरिके लिख लीजिए. मैंने आपको बता रखा है कि ब्यास रिवर मीट्स सतलज एट हरिके. ओके, तो ध्यान रखना ये आपके शॉर्टेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही मिल जाती है. क्लियर है गाइस? ओके, सो क्लास यहां पे आज का लेक्चर रोक रहा हूं. कल ये खत्म करने